Hello students, good morning. In last episode we have discussed about the distance between nearest neighbors and the radius of the atom and edge length of the crystal. But today we are going to learn about the packing efficiency. Okay, packing efficiency means the constituent particles are how the constituent particles are arranged in the crystalline solid. Okay, how they are packed in the crystalline solid and how much percentage of constituent particles are arranged in the crystal and how much are remain vacant. Okay, packing efficiency generally गोटे crystalline solid रे atom, ions and molecules to name theory. So packing efficiency can be defined as packing efficiency defined as the fraction of total space occupied by each particle in any mode. Okay, so packing efficiency can be defined as the fraction of total space occupied by each particle. The space occupied by each particle in any mode or in a crystalline solid. Crystalline solid रे ए जो constituent particles गुडाक सेमानकर केते स्पेस ऑक्युपाई करछन कहबा तार packing efficiency आउ आबा में fraction of total space occupied by each particle in any mode बोल परिबा. ओके, सो वर्तमान हम देखिबा जे packing efficiency calculation of packing efficiency. Generally calculation of packing efficiency हम simple cubic crystal, body center cubic crystal, face center cubic crystal हम calculation करथाउ. फर्स्ट देखिबा simple cubic crystal रो packing efficiency calculation. सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल को प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल मध्ये कहा जाए. फिर देखिबा ये गोटे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल रे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडा को कॉर्नर रे थांती. दे आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. These are the constituent particles present at the corners of the cube. So the edge length, suppose the edge length will be a, the edge length हमें a नवा, edge length यदि हमें आपको a नवा ताहले volume of the unit cell, volume of the unit cell कौन होगा? The volume of the unit cell A equal to हमें ले पाएगा देखो A equal to एटे गोटे 2r होगा काइंड r डिस्टेंस ए जो सेंटर डिस्टेंस ए जो constituent particle सेंटर वाला डिस्टेंस होगा r plus r equal to 2r. So volume of the unit cell equal to aq kind of error is q. So we have 2r the whole cube equal to 8r cube. Okay, this is the volume of the unit cell. Then volume of the each particle हम calculation करिबा. Volume of the particle देखो हम वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल हम करिबा. वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल ऑलरेडी हम जानि छे 4/3 पाई r क्यूब. 4/3 पाई r क्यूब हला गोटे सर्कल वृत्तर गोटे वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब लिखा जाए. हमर नंबर ऑफ एटम्स
इट हम 8 into 1/8 equal to 1 जेहेतु हमर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सेते हम नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडा प्रत्येक कॉर्नर रे थांती एमाने 1/8 शेयर करंती सो 8 into 1/8 equal to हमें 1 ले so the packing efficiency the formula packing efficiency equal to number of particles volume of equal to number of atoms into volume of the particle divided by volume of the unit cell into 100. So the number of atoms हमारा 1 आसी volume of the particle हम देख परिबा volume of the particle 4/3 pi r cube divided by 8 r cube into 100. Here the packing efficiency will be 52.4%. 52.4% of packing fraction. Okay, so the remaining vacant spaces are the voids of the simple cubic crystal. 50 to 100 और minus कर दला 100 to minus 52 minus कर दले बाकी जहाँ amount रहिला ताको हम कहबा the voids of the simple cubic crystal. Okay, एटी हम कैलकुलेशन करले simple cubic crystal रा packing efficiency. Okay, next देखिबा body center cubic crystal. In body centered cubic is also said BCC crystal. Body centered cubic crystal रे constituent particles गुडा each corner आठटा corner हम पाई परिबा एवं तार बॉडी रे मध्ये पाई परिबा one particle. ओके तो गोटे डायग्राम बनेबा सेते पई ओके बॉडी सेंटर पे हमें डायग्राम बनाएगा ओके देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडा आठटा कॉर्नर थाए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें दीटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट प्लेस करछि और एट द सेंटर ऑफ द बॉडी सेंटर क्यूबिक ओके एटी गोटे इमेजिनरी लाइन हमें ड्रा करिबा ए बी सी डी ओके एटी हम देखिबा जे D equal to here D equal to 80/2 D equal to 80/2 I mean by 80 and na distance between nearest neighbors here 80/2 equal to our distance between nearest neighbors ये दीटा constituent particles के distance पे परिबा ये दीटा constituent particles के distance का 80/2 तार हाफ D equal to 80/2 फर्स्ट हम देखिबा जे हमर एबीसी दीटा में ट्रायंगल के पाउच दीटा राइट एंगल ट्रायंगल्स एबीसी ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी दीटा में ट्रायंगल एठी पाउच एबीसी एंड एसीडी ओके
ACD ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल ABC ट्रायंगल हम देखिबा जे प्रत्येक आर एज लेंथ होची A एज लेंथ को हम A बोल करबा सो फर्स्ट देखिबा ABC ट्रायंगल इन ABC ट्रायंगल in ABC triangle our AC square equal to AB square plus BC square that implies AC square equal to AB our length होची A BC length होची A square plus A square that implies AC square equal to 2A square AC equal to root 2A AC equal to पाइले AC equal to पाइले root 2A ओके हमें another triangle देखिबा एठी आउट ट्रायंगल देखिबा ACD triangle in ACD triangle पे देखिबा हमें AD square equal to हमरा सिवा देखो ACD triangle okay AD square equal to AC square plus CD square AC square plus CD square AC square plus CD square that implies AD square equal to AC ର value हमें पकड़वा root 2 square plus CD ର value A square that implies AD square equal to root 2A square हेले हमर केटा आसीबो 2A square plus A square that implies AD square equal to 3A square AD equal to root 3A AD equal to root 3A okay AD equal to असला हमर root 3A पहले ऑलरेडी हम जानि छे AD equal to D equal to AD by 2 ओके पहले हम एटी बाहर करिबा AD equal to देखा देखिबा व्यासार्ध देखिबा पहले AD equal to एटी गोटे रेडियस हे परिबो ये होचे 2r ये होबो r सो AD equal to r plus 2r plus r okay this is the 4r AD equal to 4r okay so AD equal to 4r पता लगा नहीं परिबा तो 4r equal to root 3a 4r equal to root 3a नहीं परिबा 4r equal to root 3a okay that implies r equal to root 3a by 4 it radius equal to असला हमरो root 3a by 4 radius का root 3a by 4 असला तब क्या जदी a कैलकुलेशन करिबा ओके root 3a equal to 4r करिबो root 3a equal to 4r that implies a equal to 4r by root 3 a equal to 4r by root 3 असला सो आमेटी तार यूनिट सेल रो वॉल्यूम का कैलकुलेशन एते कर पारे a equal to 4r by root 3 4r by root 3 कहते हम रेडियस कैलकुलेशन करले और a कैलकुलेशन करले 4r by root 3 એટલે हमर फार्मूला अनुसार देखिबा वॉल्यूम ऑफ द ईच पार्टिकल डिवाइड बाय द यूनिट सेल volume of the each particle divided by the unit cell so volume of the unit cell equal to aq the formula aq 4r by root 3 the whole cube okay next देखिबा volume of each particle volume of each particle कौन आसीबो the volume of the each particle equal to एट देखिबा वॉल्यूम का प्रत्येक पार्टिकल रो वॉल्यूम
আমরা আসবো 4/3 পাই আর কিউ অলরেডি আমরা জানিছে 4/3 পাই আর কিউ প্রত্যেক গোটে বৃত্তর ভলিউমটা 4/3 পাই আর কিউ তো नंबर ऑफ एटम्स के देखिबा एठी नंबर ऑफ एटम्स ऑलरेडी हम जानिছে যে গোটে BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल रे 8 into 1/8 प्रत्येक कॉर्नर 1/8 से करछुंती प्लस गोटे एटम है 8 into 1/8 equal to 1 plus 1 equal to 2. So taking efficiency equal to हम देखिबा the number of particles 2 into 4/3 number of atoms into the volume of the each particle 4/3 pi r cube divided by volume of the unit cell 4r by √3 whole it is आसवा 68% taking efficiency body shape cubic crystal रे taking efficiency है 68%. तार voids calculation करिया 100 minus 68% करिया तार आसवा voids taking efficiency but BCC cubic crystal रे 68% of constituent particles are present in the body center cubic crystal. Okay, next देखिबा phase center cubic crystal. Phase center cubic or FCC crystal. Phase center cubic crystal रे देखिबा जे constituent particles गुडा को प्रत्येक कॉर्नर रे थांती constituent particles are present at 8 corners and also at 6 faces of the cube. Okay, देखो constituent particles का देखिबा जे प्रत्येक कॉर्नर रे थिबो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ प्रत्येक फेस जो 6 नंबर फेसेस अछि से हम constituent particle का पाइ करबा. ओके, ए देखिबा सपोज एठी हमर phase center cubic का डायग्राम बुक है. ओके, सपोज आमे देखिले जे हमर प्रत्येक एज लेंथ होची a प्रत्येक एज लेंथ a बोली बाटा एटा हमर राइट एंगल ट्रायंगल देखे पड़छे ABC राइट एंगल ट्रायंगल होची हमर ABC ABC ट्रायंगल में हम देखिबा जे हियर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर d इक्वल टू AC/2 काहे कि ना constituent particles गुडा को नियरेस्ट नेबर दीटा constituent particles भितर डिस्टेंस ता हमर AD/2 हो r सेंटर मध्य डिस्टेंस ता एकटा जदि हम गोटे AC बोली कहबा ताहले तार डिस्टेंस रे नियरेस्ट नेबर होला d इक्वल टू AC/2 so in ABC right angle triangle AC square equal to AB square plus BC square that implies AC square equal to the value of AB is equal to A square BC equal to A square and our edge length हम A नीचे then AC square equal to 2A square that implies AC equal to √2A AC equal to हमारा इसका √2A. ओके, चले AC equal to हमारा स्लाइड है √2A. एक देखिए AC equal to √2 आसला D equal to AC/2 हम जानिछे D equal to AC/2 D equal to
AC, the AC equal to value हमें कौन that implies 2t equal to root 2a, that implies d equal to root 2a by 2, or it can say d equal to r by 2, that implies r equal to root 2a by 2 into half, or root 2a by 4, r equal to root 2a by 4. कौन आसिला हमरो r equal to root 2a by 4, that implies root 2a equal to 4r, a equal to 4r by root 2. देखो हमें एक्सप्लेन करके कैलकुलेशन करले a equal to 4r by root 2 ହେଲା प्लेट हमें वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कैलकुलेशन कर परिबा a equal to हमका आसला 4r by root 2. So volume of the unit cell equal to a cube equal to 4r by root 2 whole cube, and volume of the each particle, volume the particle हम जाने से 4 by 3 pi r cube, and number of atoms equal to 8 into 1 by 8 into 6 into half. Okay, 8 into 1 by 8 काइना 8 टा कॉर्नर माने प्रत्येक कॉर्नर शेयर करछन्ती 1 by 8, 6 टा फेस प्रत्येक फेस शेयर करछन्ती हाफ. सो देखिबा हम एठी 1 plus 3 equal to 4. Okay, so packing efficiency equal to number of atoms, here 4 number of atoms, 4 into हम देखिबा volume of the each particle 4 by 3 pi r cube whole divided by volume of the unit cell 4r by root 2 whole cube into 100. then लिखिबा 72%. Okay, 72% of packing efficiency ଆମେ ଏଠି ପାଇପାରିବା. Okay, एठी हम देखुचे जे packing efficiency रे constituent particles गुडाकर packing को हमें packing efficiency बोली परिबा, how they are arranged in the crystalline solid. Okay, this is all about the packing efficiency and the packing fraction of the crystalline solid. Okay, thank you.